I think we can start, right? Yeah, we should, Manjeet. Okay. So, who was responsible for the first paragraph? Me, Who, me? Kaveri. Oh, okay, okay. Okay, then I think we should start. Yes. Yeah, then please go ahead. So, good evening, guys. This side Kaveri Sharma. And today we discuss the Ecological Leadership Development Program. And I take a responsibility of first para. So, we know that the plastic play a predominant role in our lives and three major sectors. Because of some their special and practical characteristics like lightweight, flexibility, reaction resistance, etc. Today, plastic is used food packaging to machinery components. So, plastic is a part of everything in our life. So plastic plays day-to-day role in our modern life. Nowadays, the mismanagement of plastic has become the grave concern. So, the management of single-use plastic become one of the major threat now in our life. Mismanagement in disposal, single-use plastic is impacting biodiversity, blocking waterways, endanger marine ecosystem, and then be burned into a single-use plastic. It releases immediate toxic gases. As per the CPCB report, Central Pollution Control Board, Bihar generated 68,903 tons of plastic in year 2018 and 19. Some are disposed, some are eaten by animals, and some drained into a rivers. And rest is collected by municipal corporation and thrown gathered at landfills whose disposal unscientific. However, it Kaveri, provides a earning opportunity to informal rag pickers. Thank you. okay, nice. All of you Uh, understand? If not, I explain in Hindi. it will be better if you brief it in little understandable language in short term. Kaveri. Yes, Manjeet. Can you brief it in like a little Yes, yes, shorter yes. part? Yes. Yeah, ओके okay, please. इस पैराग्राफ में मेनली यही कहा जा रहा है ना कि प्लास्टिक हमारे लाइफ और इकोनॉमिक सेक्टर्स में प्रीडोमिनेंट प्ले रोल करता है बिकॉज ऑफ इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक लाइट वेट है फ्लेक्सिबिलिटी है फिर ये रिएक्शन रेसिस्टेंस में हेल्प करता है और टुडे प्लास्टिक जो यूज है वो फूड पैकेजिंग से लेके मशीनरी कंपोनेंट तक यूज करता है सो प्लास्टिक जो है ना वो हमारे लाइफ में एवरीथिंग में यूज होता है और ये डे टू डे रोल प्ले कर रहा है Yeah, okay. नाउ डेज जो आज जो है ना वो प्लास्टिक के मिसमैनेजमेंट पे इस पैराग्राफ में ज्यादा फोकस किया गया लाइक जो मिसमैनेजमेंट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक है वो मेजर थ्रेट है Yeah. बायोडाइवर्सिटी के लिए और स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए जो हमारे वाटर वेज को ब्लॉक करता है फिर सम जो प्लास्टिक्स है ना वो इंडेंजर मरीन इकोसिस्टम को करता है फिर ये जब इसे हम लोग बर्न करते हैं तो ये कुछ टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज करता है देन Yes, इसमें good. एक्सप्लेन किया गया है ना कि एज पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिहार जनरेटेड 68,903 टन्स ऑफ प्लास्टिक इन ईयर 2018-19 जिसमें से सम डिस्पोज होते हैं और सम इटन बाय एनिमल्स एंड ड्रेन्ड इनटू अ रिवर्स और इस पैराग्राफ में मतलब लाइक ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो है ना वो प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट तो करते हैं बट उसका जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो नहीं कर पाते लाइक उससे ना कहीं गैदर कर देते हैं जैसे लाइक हम लोग देखते हैं कि कहीं भी ना वो पहाड़ के जैसा उसको ढेर बना देना फिर लाइक बोरिंग रोड में भी आप लोग देख सकते हैं
वही लाइक अनसाइंटिफिक वेज में उसको डिस्पोज करते हैं. Yeah, एंड like landfilling. लास्ट लाइन जो है वो कह रहा है कि वो जो प्लास्टिक वेस्ट है ना, वो जो रैक पिकर्स होते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो लोग होते हैं ना, उनके लिए वो एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बन रहा है, जिनका की प्ले रोल होता है वेस्ट कीपर्स वेस्ट कलेक्ट करने में. ओके, थैंक यू. Okay, thank you. Anyone has any question on this? I think this is just a normal topic. Everyone knows it. Okay, I think we can move to the next para. And by the way, if anything in this note that is not related to our campaign, and then we can edit it also. Okay, so read it wisely and understand it also, so that we can, if there are any data that not compiled with our campaign, then we will edit it. Excuse me, in fourth paragraph, there is majorly of them. There will be majority of them. Sorry, There what? is a spelling mistake. In fourth paragraph, there is a Okay, spelling okay. mistake. When we will get in the fourth paragraph, then we will edit it. Okay. Okay, okay. Okay. Then who is responsible for the second para? Nancy. Yeah, please continue, Nancy. Okay. A government of various states have tried banning single-use plastic carry bags and raided shopkeepers, vegetable vendors. जो बहुत सारे स्टेट के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कोशिश किया कि सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग को बैन करने का, और however no at और जो भी शॉपकीपर्स है और वेजिटेबल वेंडर्स है, उन पे उन्होंने रेड भी किया. However, no attempts were made to curb single-use plastic packaging on almost all products, which account for 74% of single-use plastic pollution. कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया गया सभी प्रोडक्ट पर सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग को रोकने के लिए, जो कि 74% सिंगल यूज प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. It's high time we need to realize and define this era as a plastic culture and inculcate habits supporting our lifestyle with plastic products. यही सही समय है, हमें जरूरत है और डिफाइन करने की जरूरत है प्लास्टिक कल्चर को, और जो भी हमारे लाइफस्टाइल में प्लास्टिक प्रोडक्ट जो रिलेटेड है उनको समझने की जरूरत है. ओके, थैंक यू. Yeah, nice. Thank you, Nancy. Any question, anyone? I think this is that's a simple thing. I don't think anyone have any doubt in this. If anyone have, then please ask, or we can move to the next para. Who is going to read? I will read it. Palak. Okay, yeah, please, Palak, continue. Okay, so in this paragraph, we can see कि plastic waste management rules 2016 के according एक new concept start हुआ था, that is EPR, extended producer responsibility. So मैं एक example के through आपको ये पूरा concept clear कर देती हूँ. Let's suppose please. Samsung ने fridge manufacture किया, like वो fridge manufacture कर रही है, तो वहां से वो चीज प्रोड्यूस किया, देन वो ब्रांड ओनर्स या इम्पोर्टर्स के पास जाता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आएगा एंड देन रिटेलर्स के पास. आफ्टर दैट हम लोग उसको क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं. देन वो जब उसका यूजेबल लाइफ खत्म हो जाता है तो उसे हम फेंक देते हैं. देन इट वुड बी कलेक्टेड बाय द कलेक्टर्स. ओके, फिर उसके बाद वहां से वो वेस्ट बैंक के पास जाएगा, दैट इज कबाड़ी वाला, ये लोग जो रहेंगे वो कलेक्ट कर लेंगे, और वहां पे ना सॉर्टिंग होती है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक होते हैं, उन्हें अलग किया जाता है. वहां से वो चीज रिसाइकलर्स के पास जाती है एंड रिसाइकलर्स एक स्लिप काइंड ऑफ थिंग प्रोड्यूस करते हैं कि यहाँ से इतना प्लास्टिक जनरेट हुआ, इतना हमने रिसाइकल किया है. तो उस स्लिप को लाइक सर्टिफिकेट को कहते हैं जनरेट सेफ डिस्पोजेबल सर्टिफिकेट. तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि अब जो प्रोड्यूसर, ब्रांड ओनर्स और इम्पोर्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ सेल तक लिमिट नहीं है. अब आगे उनको जो प्रोडक्ट हुए और उसका यूजेबल लाइफ खत्म हो गया एंड देन उससे जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसको भी रिसाइकल करना है. दैट्स ऑल.
Anyone have any doubt? Yeah, nice explanation, Palak. Thank you. Thank you. Anyone have any doubt in this? No? Okay, one more line is left. Okay, इस please. पैराग्राफ में लास्ट लाइन में ये चीज लिखा है ना कि एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होता है, तो ये जो सर्टिफिकेट जनरेट हुआ जिसमें वो सारा डिटेल्स लिखा होगा कितना प्लास्टिक रिसाइकल हुआ, वो उस पर्टिकुलर स्टेट में, लाइक अगर कोई कंपनी लाइक सपोज कि बिहार में है तो उस स्टेट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को वो स्लिप सबमिट करती है, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को सबमिट किया जाता है. दैट्स ऑल. Okay. And is there any benefit of submitting that certificate? If you have read it about that, you can say. पलक, आपने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या कि उसके सर्टिफिकेट कोई बेनिफिट्स भी होता है क्या? ऐसा कुछ पता है क्या? बेनिफिट इसका यही हुआ ना कि अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है एंड देन उससे वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो वो चीज सही जगह से रिसाइकल हो जा रहा है. लाइक वहां पे मैंने बताया था एक पॉइंट सॉर्टिंग वाला, तो वहां वो Yes. लोग एक अपॉइंट करते हैं एंड वहां से ना डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लोग अपने अपने लाइक ब्रांड्स के प्रोडक्ट को सॉर्ट कर लेते हैं वेस्ट को, तो फिर उस पर्टिकुलर ब्रांड का वो चीज रिसाइकल हो रहा है. तो इस चीज को वो दिखा सकते हैं गवर्नमेंट को डेट कि हमने बनाया तो इतना सेल तो किया है, बट यहाँ पे सिर्फ बना के छोड़ा नहीं है, एटलीस्ट वहां से वेस्ट जो है उसका रिसाइकल किया एंड उसको सॉल्व किया, प्रॉब्लम को पॉल्यूशन क्रिएट नहीं किया ज्यादा. Yes, yes. Is they got any like point or rank for this, like segregating the waste from? I can't understand, Manjit, what you asking. Like in if you go for the vehicles like motorcycles, or if you go to like 4-wheeler vehicles, वहां पर ऐसी होती है कि अगर आप कुछ ऐसा व्हीकल्स बना रहे हो जो कि लेस पॉल्यूटिंग है, तो आपको वो मैन्युफैक्चर करने के लिए पॉइंट्स मिलते हैं, या आप लेस पॉल्यूटिंग चीज बना रहे हो. वैसा ही इसमें कुछ सिस्टम है क्या कि लाइक अगर आप उसको रिसाइकल कर रहे हो तो आपको उसका कुछ पॉइंट्स मिलेगा, और उस I'm पॉइंट्स not का aware वैल्यू of ये this, होती है कि but I guess कि they will get subsidies kind of thing. oh yeah, okay, that I was asking about. Yeah. So any question, anyone else? No. Okay, that's maybe we can move to the fourth para. Who is going to read that? Who was responsible for that, reading that para? No one? Okay, let me check the group. I think there was some name. Rishika, are you in the meeting? Rishika, I'm sir. sorry, Manjit. I'm sorry. I got confused. मैंने सोचा कि मैंने fifth point लिया है. Oh no, I'm it's sorry. you can continue, please. And someone was telling any mistake in this para. Can you please repeat the mistake? Yes, I was saying actually here. मेजरली की जगह मेजॉरिटी होगा आई गेस. हाँ हाँ वही हम बोल रहे हैं. सो यहाँ पे बात हो रहा है PIBOs के बारे में, विच स्टैंड्स फॉर प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स. उनको बोला जाता है कि इस पॉलिसी के लिए वो कोलैबोरेट कर सकते हैं विद हमारे लोकल जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर जो उनके साथ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. और लाइक ये पॉलिसी सिंस इंडिया में आ चुका है, तो देर आर एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन देर आर 21
PROs में बेसिकली कंपनीज होते हैं, कंपनीज उसका पार्ट होते हैं। तो उसमें से लाइक 21 कंपनीज ने इस पॉलिसी के रिगार्डिंग अपने आप को एनरोल किया है। Okay. और जिसमें से मेजरली आर मैन्युफैक्चरर्स जिनके प्रोडक्ट्स में लाइक प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो वैसे लोगों ने ज्यादा अपने आप को एनरोल किया है इस चीज के लिए। Okay. So what is this PRO like? In इनका ये guidelines क्या होते हैं? वो कैसे करते हैं? These are basically मंजीत एक मिनट। Yeah, please. So हाँ, it's written there PIBOs। हाँ, so इनका बेसिकली काम ये होता है कि जैसे PRO होते हैं, वो लोग कंपनीज को बेटर टेक्निक्स बताते हैं फास्टर सेलिंग के लिए। और Okay. PIBOs होते हैं, वो लोग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वर्क करते हैं। कंपनीज उनको ज्वाइन करती हैं कि लाइक हाउ कैन दे मिनिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक इन द प्रोडक्ट्स। तो Okay. इनका बेसिकली मोटिव यही होता है, प्लास्टिक रिडक्शन। Okay. Okay. And everyone understood this? Or does anyone have any doubt? Everyone is No, silent. Mandy. Yeah. Okay. Okay. The majority or majorly thing changed. It is right now or Now it's correct. okay. Okay. I think we can continue from the fifth para. So who is going to read? It's natural। Okay. Please continue. Also. इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि 4 साल बाद भी जो 100% में उसमें भी 4% उसको ये बारे में नहीं पता है। और जो गवर्नमेंट है वो इनकी जानकारी मतलब अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ना तो गवर्नमेंट कर रही है कुछ, ना PIBO और ना PRO। और जो सभी स्टेक होल्डर्स सिर्फ इसमें जो काम करते हैं स्टेक होल्डर्स, वो सिर्फ पास करने का खेल खेल रहे हैं। और जो पॉलिसी होती है वो तो जो पॉलिसी होती है वो पहले दुनिया के देश से इंपोर्ट की जाती थी और शायद ही किसी को इसके इम्प्लीमेंटेशन का कोई अंदाजा हो। और जो पॉलिसी मेकर्स है जो EPR पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब तक दो बार अब तक समय सीमा बढ़ाई है, मतलब एक्सटेंड कर दिए टाइम। Okay. Achal, is it? Can you repeat it like in the brief? Like आप छोटे से एक सेंटेंस में समझा सकते हो क्योंकि आपके वॉइस काफी क्रैक हो रही थी तो अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था आप क्या बोल रहे तो सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाती हूँ। हो। Okay. No. So can you repeat it in like a shorter part, like in छोटे से सेंटेंस में आप उसे ब्रीफ करके एक रिपीट कर दो तो बेटर रहेगा ताकि अच्छे समझ में आ रहे। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जो 4 साल बाद भी मतलब इवन 4 साल बाद भी जो 100% में जो पॉपुलेशन उसमें 4% पॉपुलेशन में भी इस पॉलिसी की जानकारी नहीं है। और ना और ये मतलब पॉलिसी बढ़ाने के लिए मतलब अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ना तो गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना PIBO और ना ही PRO। और जो स्टेकहोल्डर्स है वो सिर्फ पास करने का खेल खेल रहे हैं। It means this और is the only policy on the paper, right? यस सिर्फ पेपर्स पे ही रहता है और ये बार मतलब इसमें 2 बार डिक्लाइन हो जा मतलब जो टाइम रहता है पास करने का वो रुक जा रहा है, मतलब समय डिक्लाइन कर दे रहे, एक्सटेंड कर दे रहे इसमें।
Okay, what's the current date of the deadline? Like, do you know this or? Okay, no is. नहीं मैंने Okay, it's thank you, Achal. Can do any have any query on this? No. Okay. We will move to next part. Our sixth para. Who is going to read it? It's me, Soni Kumari. Okay, yeah, please, Soni, continue. तो इस पैराग्राफ में बेसिकली बताया गया है कि सारे जितने भी स्टूडेंट्स के बीच में एक डिस्कशन हुआ था जो 2018 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, वहां पे उसका जो थीम था दैट इज #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और तरुमित्रा में स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन हुआ था वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस के कि हम कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, जिसमें से एवरी स्टूडेंट्स 100% ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने कंसिडर किया था कि रिसाइकलिंग इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस द प्लास्टिक पॉल्यूशन और गवर्नमेंट को इस पे पॉलिसीज भी बनानी चाहिए। एंड 73% पीपल्स ने एग्री किया था कि हमें कि बहुत ज्यादा ही अवेयरनेस की कमी है अबाउट अ सेग्रीगेट वेस्ट। और 34% पीपल क्लेम किए थे कि हाई जो भी सेग्रीगेट वेस्ट का हाई वैल्यू होगा हम उसको सोल्ड कर सकते हैं रिसाइकलर्स को। और हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए 67% लोगों ने सजेस्ट किया था कि जो भी गुड्स हमें जो भी सामान मिलते हैं जो ज्यादा पैकेजिंग के साथ आते हैं उसे अवॉइड कर दे लेने से, जिसमें से 73% पार्टिसिपेंट्स ने कहा था कि जितने भी हम सामान ले रहे हैं वो उन लोगों को हम अलग जगह डिस्पोज करें ताकि रिसाइकलर के लिए वो आसानी से हमें मिल सके, वो मिक्सअप ना हो जाए बाकी दूसरे चीजों के साथ, वरना रिसाइकलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और ये डिस्कशन फर्दर आगे बढ़ा जिसमें हमें पता चला कि जो भी हम लोग नॉलेज बता रहे हैं स्टूडेंट्स को वो नॉलेज दिखने को मिल रहा है उनके हाउस होल्ड्स में भी कि दे आर उनके हाउस होल्ड्स के पीपल भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और ये इंडिकेट करता है नॉलेज की भाई कैंपेन जो भी हम लोग कर रहे हैं सेग्रीगेशन और प्लास्टिक्स पॉल्यूशन को लेकर, प्लास्टिक वेस्ट को लेकर, ये बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है पीपल्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में और उनके पेरेंट्स के बीच में कि प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन वेस्ट है, उसको हम रिसाइकल करें। दैट्स होल अबाउट इट। Okay, thank you, Sonu. And do we have any query on this? Anyone? Okay. So we can move to the next para. It's seventh. Who is going to read it? Who was responsible for it? Sweta Gupta, are you in the meeting? Does Sweta in the meeting? No, I don't think she is there. In the... Okay, can anyone else read this for this meeting? I can. Yeah, please read it.
in this para, it's saying that wait, let me read. Yeah, please take your time. I think you can read it. Till then, we can move for the eighth part. In the time, read it and understand it. Okay. I will explain it now only. Okay. Please. या एक्चुअली जो लोग थे वो लोग इतने वो कॉन्शियस नहीं थे, मतलब कि हम Okay. लोग को प्लास्टिक यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए। उन लोग को इतना अवेयर वो लोग इतना अवेयर नहीं थे कि प्लास्टिक का जो इतना मिसमैनेजमेंट हो रहा है, और लोग बहुत केयरलेस थे इसके तरफ, क्योंकि वो लोग वेस्ट को जो है मिक्स कर दे रहे थे। वो लोग सेग्रीगेट नहीं करते हैं वेस्ट को, और जिसके कारण जो रिसाइकलिंग का जो चांसेस रहता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि लोग प्लास्टिक कैरी बैग जो होता है उसको लोग ज्यादा कन्वीनियंट समझते हैं। हाँ, उन लोग कन्वीनियंट समझते हैं प्लास्टिक कैरी बैग्स को, सारे वेस्ट को एक साथ डिस्पोज ऑफ करने के लिए। और म्युनिसिपल वेस्ट कलेक्शन, और जो म्युनिसिपल जो हम लोग के यहाँ जो कचरे वाले लोग आते हैं, वो लोग भी जो होते हैं, वो लोग लैंडफिल्स में जो ये सब जितना भी मिक्स्ड वेस्ट है उसको डंप कर देते हैं। और और जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स है, वो लोग जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका जो वो सॉइल हो जाता है, मतलब फेंकने से मिट्टी और ये सब जो है वो हो जाता है। तो जो रैग पिकर्स होते हैं, इसमें दिया नहीं है बट आई थिंक यही होगा कि जो रैग पिकर्स होते हैं वो चाहते नहीं है कि हम मतलब उतना मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि उन लोग को इस पे ज्यादा पैसा मिलता नहीं है सिंगल यूज प्लास्टिक्स पे जो छोटे छोटे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रैपर्स और ये सब होते हैं। आई थिंक यही होगा। Okay. Thank you. What's your name? I will take it. Thank you, Ganga. Do anyone have any query on this? No. Okay. I think so. We can move to the next para. The eighth one. So, who is going to read it? Sorry. Yeah, please continue. हाँ, इस पैराग्राफ में ये दिया है कि जो आइडिया है सिंगल प्लास्टिक को बनाने का। Your voice is so much cracking. Can you go to the better place where network it's so much cracking. I'm not able to. Anjali, are you there? Anjali, are you there? हेलो, Yes. अभी सही आ रहा है आवाज? Yeah, we will manage. Please continue. अभी हो गया था मेरा। इस पैराग्राफ में ये दिया है कि जो आइडिया है सिंगल यूज प्लास्टिक को कैद करने बनाने का किया गया है और एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि ये सिंगल यूज प्लास्टिक को पेट में बंद करके रखता है, जिससे वेस्ट से दूर रहता है और मिक्स नहीं होता है। ये आइडिया इको ब्रिक बनाने का वो प्रिवेंट करता है कंटामिनेशन एनवायरनमेंट में, ड्रेन्स को रोकना या फिर वाटर बॉडीज में सिंगल यूज प्लास्टिक का जाना, या जानवर जो प्लास्टिक को खा जाता है, इन सारे चीज को प्रिवेंट करता है। और रैक पिकर्स जो होता है उनको भी इजी होता है इको ब्रिक्स इको ब्रिक का आइडिया एक्ट करता है एज अ कैटलाइजर,
फॉर ERS ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जिससे कि वो कलेक्ट करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को। सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट करना इससे ज्यादा कन्वीनियंट होता है। स्कूल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और स्टूडेंट को अगर वो बताते हैं इन सारे चीज के बारे में तो वो अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं, जिससे कि कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। रिसाइकलर्स को मतलब कांटेक्ट किया जा सकता है मंथली कलेक्शन ऑफ इको ब्रिक के लिए। Okay, thank you. Thank you. Anyone have any problem, like any query in this? आप सभी को समझ में आ गई? Yes. Okay, so I think we can move to the next one. I think next is the 9th para, right? Yes, sir. Okay, so who is going to read it? Sir, me, Ansika. Yeah, please, Ansika, continue. सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिंगल यूज प्लास्टिक को तरुमित्रा लाया और उसे हट बनाया। जैसे जैसे टाइम मतलब बीतता गया, स्टूडेंट्स का जो डेली रूटीन के कारण जो प्लास्टिक को सेग्रीगेट करना था वो धीरे होते गया। और फिर हमने 2 अलग अलग मेथोडोलॉजी बनाया जो कि स्टूडेंट्स के चेंज ऑफ हैबिट्स के बारे में बताता है। फर्स्ट मेथड है मीडिया बेस्ड इंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। इस मेथड में हमने एसटी पॉल एकेडमी के क्लास 7 से 9 के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, जिसमें हमने 40 मिनट्स का स्मार्ट क्लास सेशन रखा, जिसमें हमने प्लास्टिक के मिसमैनेजमेंट के कारण होने वाले प्रॉब्लम को बताया और सिंगल यूज प्लास्टिक को 750 ml पेट बॉटल में कलेक्ट कर उससे एक हट बनाने का इंस्ट्रक्शन दिया तरुमित्रा में। Okay, thank you. Thank you, Ansika. I think, do anyone have any questions? मंजीत, उसने मेरा ही पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दिया। Okay. Which para you have explained, Ansika? I think you were 9. The para was 9. यस सर, 9 और उसका 9 and फर्स्ट 10। Okay, nice. So, which para were you? Prabha, आपको कौन सा para था? 10th था। Okay, we both have so short. So, if you want, you can choose another one, or maybe we can go एक्सप्लेन for कर दो, क्योंकि मैं नीचे थोड़ा चेंजेस की हूँ। Okay, yeah, then please explain it again. Okay, so first method is media based instructive program. इसमें हम पिक्चर, स्लाइड्स एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू चीजें समझाते हैं। तो एक 40 मिनट इंटरैक्टिव स्मार्ट क्लास सेशन कंडक्ट किया गया सेंट पॉल्स एकेडमी में। क्लास 7 to 9 से 5 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए, जिन्हें उन्हें प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उनके बारे में बताया गया। देन एक सोल्यूशन शेयर किया गया जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को 750 मिलीलीटर पेट बॉटल्स में भरा जाए, जिससे वो इजीली रिसाइकल हो पाए। That's it. Yeah, okay. Who is going to read the 11th part? Actually, I thought that the students of St. Paul's Academy was the 11th para. However, I will explain that one also, the upper one. Here it is written that on the 6 sessions were held. The program had 6 sessions, which was conducted with 20 students from Don Bosco Academy. Then the program was conducted, which focused on knowledge expansion, change in attitudes, change in behavior,
and habits towards the impact of plastic mismanagement. Then students were exposed to the problems of plastic mismanagement, national legislation on plastic waste, and roles and responsibilities of various stakeholders. Then interactive session was also conducted, which discussed about the practical learnings of the practical learning, in which they were told about the roles and responsibilities of stakeholders, and manufacturers, citizen rag pickers, and etc. uh, हाँ इतना ही था. Okay. And the 11th para, there was an activity which was conducted for the making of eco brick in two schools, namely St. Paul's and Don Bosco Academy. The students of St. Paul's Academy collected 68 bottles of various shapes and sizes filled with single-use plastics and papers. The total amount collected was 2.8 kgs, where the students of Don Bosco Academy took more interest in this activity, as they made 216 eco bricks with single-use plastics filled in it. The total weight was 48.6 kgs, which was made by Don Bosco Academy students. They utilized their leisure in the total weight was 48.6 kgs. They utilized their leisure in raising awareness among their peer group fellow classmates about problems of plastic mismanagement, national legislation on plastic waste, roles and responsibilities of various stakeholders. Students of Don Bosco Academy took an active part in this activity, and they had written a letter to the ice cream manufacturer company to find the alternative of plastic spoons instead of to find the alternative of plastic spoons. Okay. Nice. Thank you, Kansa. One more thing. Can you little brief it in a short way so that मन जी, everyone can. ये 12th Yes. पैरा मेरा था, हम एक्सप्लेन करने वाले थे. Okay. So I think Kansa was explaining 11th one, right? 12th भी की है. What are you doing, guys? ऊपर में जो पैरा था, आप स्क्रॉल करिए प्लीज ऊपर. Yes. इसमें जो है many students, तो वो उसके बाद नीचे भी कंटिन्यूड है टू लर्न द पैटर्न ऑफ लर्निंग, जिसमें फर्स्ट पैरा जो है वो उसमें इंक्लूडेड है, तो वो टोटल 9th पैरा हुआ, और सेकंड वाला इकोलॉजिकल इंटरैक्टिव वाला वो 10th पैरा हुआ, और वो वाला 11th पैरा हुआ. आप लोग देख सकते हैं. बट सर ऐसे ही बोलते पैरा, और मैं तो ग्रुप में लिखा हुआ Okay. Wait. I think there is no issue. उस हिसाब से हम 11th पैरा लिए थे. अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो कर सकते हैं. Yeah, you can explain it again, like in the brief, so that everyone understood it properly. ओके. Yeah. जैसे हम लोग अभी ऊपर के पैरा में देखे कि 6 सेशंस कंडक्ट हुए थे विद 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम डॉन बॉस्को स्कूल. जो सेशंस कंडक्ट हुए थे वो बेसिकली प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट पे थे. सो इन द 12th पैरा सेंट पॉल्स एकेडमी के स्टूडेंट्स जो थे वो कलेक्ट किए थे टोटल 68 बॉटल्स, जो डिफरेंट साइज और शेप के थे, जो मोस्टली फिल्ड हुए थे सिंगल यूज प्लास्टिक से, जो हाफ फिल्ड हुए थे और हाफ थे उसमें पेपर. और जो प्लास्टिक कलेक्ट हुए थे उसका टोटल वेट था 2.3 किलोग्राम्स. और अदर साइड डॉन बॉस्को स्कूल के स्टूडेंट्स टोटल 216 बॉटल्स कलेक्ट किए थे, जो फिल्ड थे सिंगल यूज प्लास्टिक से, और प्लास्टिक से थे, और बॉटल्स का यूनिफॉर्म साइज था, मतलब सेम शेप और साइज का बॉटल्स था. और प्लास्टिक जो कलेक्ट हुए थे डॉन बॉस्को स्कूल से वो उसका अमाउंट था 48.6 किलोग्राम्स. फिर देन डॉन बॉस्को स्कूल के स्टूडेंट इन सब प्रोसेस में ज्यादा इन्वॉल्व थे. वो लोग खुद का आइडियाज भी शेयर किए थे कि कैसे बॉटल्स को डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं. देन डॉन बॉस्को के स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी का सही से यूज किए, और वो अपने गेम पीरियड्स और फ्री टाइम में अपने क्लासमेट्स को ये सिखाते थे कि प्लास्टिक वेस्ट के मामले में बेस्ट डिसीजन कैसे ले. वे स्टूडेंट्स प्लास्टिक वेस्ट के लॉज और उसमें डिफरेंट लोगों
लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते थे। डॉन बॉस्को के स्टूडेंट्स ने एक आइसक्रीम कंपनी को लेटर लिखा और उन्हें प्लास्टिक स्पून के अल्टरनेटिव को ढूंढने और यूज करने को एडवाइस दिया। उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट के बारे में अपने सिटी के लिए कुछ न्यू लॉज भी लिखे और उन्हें पटना के म्युनिसिपल कमिश्नर को ड्राफ्ट किया। डन। Okay. Thank you, Kajal. I was audible now or not? Now you are. Okay. 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 Thank you, Kajal. So, does they have given some of the rules to the municipal corporation? Does anyone know that the rules have been implemented or not till now? I think the rules have been implemented but they are not followed Okay. The typical because many thing not. people are not aware of it. Yeah. Okay. Okay. So we can move forward. Is there any problem in the 11th 12th para? Anyone? No, I don't think so. So we can move forward to the 13th one. Is it 13th? This one? This is 13th path, right? Yes. Okay, who was responsible for the 13th part? Am I audible or not? Yes, you are audible. So then please everyone reply. Who was responsible for the 13th part? Prerna was responsible. Okay, Prerna, are you here? Yes, you are. Then please unmute yourself and Prerna, unmute yourself and please read it. Am I audible or not? Yes, Manjeet, you are. Is Prerna sleeping or watching TV? Can someone call her? Or wait, let by the who was responsible for the 14th part? Let's continue from there till now, till there. Let me contact you. Who was responsible for the 14th part? What are you doing? Okay, let me check in the
Okay, no, no one has taken 14. Hello, any one of you can read it? Again. So can anyone explain 13 part by reading it now? Come on, we have so many people that have haven't. Yeah, so I was telling, we have so many people who haven't read it. So please come forward and do the needful. Reading a paragraph is not a big thing. Okay, so now everyone started leaving the meeting. No issue, those who are doing the meeting, they will Okay, so let me take the name. Komal Raj, can you read it? Or anyone else, like Sivang, are you here? Sivang, am I audible to you? Utkarsh Ranjan? Utkarsh Ranjan? Oh, okay, Palak, can you note their names? Sivang, Sivang Kumar, Utkarsh Ranjan, Komal Raj, their names? Okay, I'll do. Yeah, and please note the date also. Okay. Shivani Kumar, are you here? Shania Dashwal, Shadaf Naz. No one is replying. Okay, no issue. The exam will be taken. What about the critical engine? See, if you don't reply within Am I audible? Yeah, you are audible. Prerna, then why you have taken that? At least don't take the responsibility if you can't do that. Okay, Ritika, can you read out the 13th part? You can take like 2-3 minutes for the reading the paragraph, then explain it in the brief to everyone. Can you do this? Yes, I can.
Yeah, I then have to please. start from shared their own ideas or experiment with two schools. Which was the part? Can anyone just tell me that which was the part, the 13th part? I think this is the 13th part because upper has been already explained. So this one you have to explain. You can take few minutes for the understanding, then you can explain it in the brief. Experiment with two schools helped us to understand that the habit change and ecological behavior towards plastic is achievable if youth are equipped to make informed choices. A comprehensive long-term educational program is required to convert awareness into habit change and in circulate behavior. Schools would play an inclusive role in restructuring and inculcating habit change behavior and build future ready citizens equipped with ecological intelligence who can safeguard our depleting environment and adapt to habit change as per demand of plastic culture. So here this is saying about कि स्कूल्स जो है हमारे कैंपेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और हम लोगों को यूथ को अवेयर करने के लिए कुछ एडुकेशनल एडुकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट करने पड़ेंगे ताकि उन लोग को हम लोग अवेयर कर सके और उन लोग फिर बाद में जाके सोसाइटी को और अपने नोन लोगों को अवेयर कर सके और फिर इस तरीके से हम लोग अगर यूथ पॉपुलेशन को अवेयर करते जाएंगे तो यूथ जनरली स्कूल्स में होते हैं कॉलेजेस में होते हैं तो अगर हम स्कूल्स को रीच करेंगे तो वहाँ नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगा और वो हैबिट चेंज में बहुत हेल्पफुल होगा उन लोग को अवेयर करने के बाद और ये हमारे बेटर फ्यूचर की ओर रिप्रेजेंट करेगा और अभी का जो करंट डिमांड है प्लास्टिक को उसको मेट करेगा प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोक करके और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करके Okay, thank you, Ritika. Does anyone have any question on this? No. Okay, thanks. We can move forward. Who is going to read the this 14th part? How much we have? Yeah, this is the last thing. And 3 people can divide, or maybe only one can do this. I don't think this is so big. So who is going to do this? Shweta Kumari, are you here? Shweta Kumari, are you here? No. Okay. Position now? Position now, are you here? Palak, you are noting the name, right? Yes, I am. Oh, very nice. Who left? Sivan, Utkarsh, anyone of you are now available or not? Anya, can you do? Okay, we have Anya also. Okay. Anya, please unmute yourself. Where is she? I don't see her name. Okay. Your Okay. voice is not clear, please. Sorry, what? Jasmine?
You are taking the name, so then your voice is not coming clearly. Oh, okay, okay. I think wait. Now is it clear? Yeah, Okay. So where is Anya? Yeah, Anya, are you audible? Sorry, am I audible to you? No. Okay. So Jasmine, can you do this? Like Yeah. explain? yes, I can. Yeah, then please. You may On take a few minutes for that understanding, or maybe you can explain. now I started. Yeah, it's all upon you that you can understand. Online internship program for capacity building of degrees and postgraduate students are being conducted in various cities to equip them with knowledge and information on the campaign. These students are developing skills, ideas, interactive activities, and materials to introduce ecological leadership development program in 5 schools in their cities and pilot project. ये जो ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम है उससे जो ये इको ब्रिक्स जो बनाते हैं ना उससे भी ऐसा कि एक बिल्डिंग की तरह तैयार किया जाए और जो इसमें मेनली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और अलग अलग सिटीज में कंडक्ट किया जाता है ताकि ये कैंपेन को ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सके और ज्यादा लोगों को अवेयर कर सके कैंपेन के बारे में और हर एक स्टूडेंट्स हैव देयर डेवलपिंग स्किल्स और आइडियाज और इंटरैक्टिव एक्टिविटीज होता है ताकि अपने लीडरशिप प्रोग्राम को अच्छे से चला सके और ये 5 schools in their cities as a pilot project. Redevelop ecological leadership development program will online Zoom or Google Meet engage 50 students of secondary and higher secondary level from each schools on a weekly basis for next 3 months. Within 3 months, interns will take the multidisciplinary approach to share the knowledge on history of plastic, economic impact, and plastic on industries and people. Policy approach of government and United Nations science of plastic being incredible material humanity science of our relations to the plastic. और जो ये डेवलप इकोलॉजिकल लीडरशिप प्रोग्राम होता है वो ऑनलाइन होता है थ्रू जूम और गूगल मीट के थ्रू जिसमें 50 स्टूडेंट्स सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लोग इन्वॉल्व रहते हैं अलग अलग स्कूल्स के और ये 3 मंथ का प्रोग्राम रहता है 3 मंथ का वीकली प्रोग्राम रहता है और विद इन वो 3 मंथ में जो इंटर्न्स होते हैं अलग अलग अपने स्किल्स को शो करते हैं और अलग अलग अप्रोच होता है सब लोगों का और प्लास्टिक और इंडस्ट्रीज एंड पीपल पॉलिसी अप्रोच करते गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशन साइंस प्लास्टिक बीइंग और फिर ये सब के लिए काम करते हैं environment and ecological impact in a positive or negative way of plastic. School students will be engaged in developing literature, poetry, role play, and short films on plastic. Such activities will enable school students to observe and understand the interconnectedness of issues and develop a viable ideas and action plan to resolve them locally and send their suggestion to concerned industries and corporation and departments. जो students होते हैं वो उनको engage किया जाता है और वो engage बहुत ही interactive way में चाहे वो पोएट्री या फिर कोई रोल प्ले करके कर सके या फिर शॉर्ट फिल्म करके वो अपने उसको शो करते हैं प्लास्टिक का जो प्लास्टिक के ये कुछ ऐसा शॉर्ट फिल्म या फिर रोल किसी चीज में प्ले करते हैं फिर पोएट्री बनाकर वो ऐसा वेरियस एक्टिविटीज से वो ज्यादा इंटरैक्टिव बनाते हैं वो सेशन को और ये सब एक्टिविटीज होता है जो स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं समझते हैं और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड फील करते हैं कैन आई गो मोर
Yeah, please. It's all upon you. As per new Uniform Framework of Extent Producers Responsibility 2020, published in June 2020, Student Pollution Control Board is responsible to provide IEC grant to NGOs or they can run campaign themselves. एक जो फ्रेमवर्क बना है बाय प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2020 में जो कि पब्लिश हुआ है जून 2020 में, फर्स्ट है जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आईसी ग्रांट करने के लिए एनजीओस को एंड कैंपेन को रन करने के लिए. PROs are responsible to provide IEC grant to NGOs and they can run campaign themselves in cities and they provide plastic waste collections for their respective PIBOS. जो PROs वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आईसी ग्रांट के लिए एनजीओ के लिए ताकि कैंपेन रन कर सके खुद ही सिटीज में और फिर प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन ये सब में. CSR funds for PIBOs can be utilized for infrastructure capacity building and IEC. जो funds आते हैं CSR funds उससे वो यूटिलाइज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग बनाने में IEC में. I think it's done. Okay. Thank you. Thank you so much, Jasmine. Welcome. Yeah. So I think we have done all of them. Anyone have any query in the last one, like that Jasmine has explained? Manjeet can't understand the concept of IEC grant. Okay. IEC grant. Okay. Does anyone know what is IEC grant? Okay, okay. Actually, I also don't know. But, let me paste it on the Google and ask Google for this. And Google will able to nicely grants. I think IEC is like a fund. Yeah, it's a fund, global fund, which is managed by International Electronics Commission. Okay, okay. The commission which is responsible for all the electronic device. Okay, so can anyone explain the IC grant after reading these things? Or maybe you can read by yourself. See, the IC grant is nothing but just a fund which is provided to all the. Wait, let me read it first. Oh yeah, yes, Sweta, I understand the problem. No worries. Please, maybe it will be fixed from the next meeting. Okay, see, what I understood is that IC grant is nothing but just a fund which is provided to those projects who are working on this addressing this specific the global environmental like thing and decreasing the electronic waste kind of thing. This fund helps those projects to work properly. Okay. Okay. Is it clear? Yeah. Yeah. So IC fund is just like what I can say, like this is a fund that this is a group. The International Electronics Commission is an organization
who just giving money to the projects in projects to build a better environment. Like the project कुछ ऐसे projects होते हैं जो कि environment को थोड़ा global environment को बचाने ठीक करने में काम करते हैं project, उस projects को ये fund करता है और funding को ही IEC grants बोलते हैं. So they basically provide grants and funds to NGO. Yeah, NGO and companies, maybe anything as well. जो भी वो project कर रहा है उसके पास अगर funds उतने नहीं है, then they provide them this. Okay. By the way, Thank this is maybe you know this is the International Electronics Commission. This controls the whole chain of the electronic products, like not at purchasing or selling part, but yeah, the waste management system of the in the international level, which is controlled by this IEC. Okay. Like in India, we have state board, central board of pollution control. So this is the international board. We can say this is the international board of the electronics waste. Understood, Manji. Yeah. Anything else, guys? I think everyone has understood the whole concept note. Anyone have any query from the whole concept note? From anywhere? No, it's clear now. No, Manjeet. Yeah, others also speak. I always hear only two voices, one from Nakavir and the other from Balak. It's clear. Guys, you want more voice? It's clear. Okay, fine. What about Okay. others? Maybe they all have understood well. Yeah. See, we have talented people. So yeah, do we need to discuss anything else or just a concept note? Okay, I think we have just this. So what's the time? Oh, it's already 10:14. Okay, just for 5 minutes, I want to discuss a little bit something like have you all heard the song that sir has sent? Yes. 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 Okay. So I think you have this. I think sir has also told us that the song was made from the previous interns. So can we expect something like that? Not the music, but yeah, something like creative from the dispatch of the intern. Does anyone have any plan, idea, anything? You don't need to tell it if you don't. If you are thinking about it, then it's okay. Then also no issue. But if anyone have any idea currently in their mind, they can tell. We can write poetry on this campaign, like poetry sort of thing. Okay, nice. It's also a nice idea. And by the way, let me clear one thing. Whatever you think that we will the secondary part, like you, of course, you will make this and that will be good for our campaign. But then don't forget about the main thing also. Like, of course, you are doing things that that's really happen, that's really good. But I will request that don't forget the main thing that we need to create the content of for the our campaign also. Yeah. So how you going to create that poetry? Like any plan? Not yet. We'll think about it. Okay, let's see. If you need help, then you can take the help from the fellow interns. You can drop a message on the report.
Okay. Yeah, that's it. I think that's it for today. And what is the update on that? Let me open that. On these points, like we have decided the first points, but what about the others, like these 4 points? Does anyone have worked on this? No, yes. No one. Guys. What's On content writing or school part? no on the content writing? I think we have discussed this in the previous meeting, right? That everyone has to do the 1 point, like write 1 point for the every part of this content. No one has done anything. Okay, so everyone now left the meeting. Only 14 of you are here. Okay, can I expect it at the next meeting? Okay, will do. What about others? They don't want to do? Yes, Manjeet. Else? What about others? They are not here, I guess. Please say something, guys. Anya, Astha, Kushi, Komal, Preeti. Anyone? Manjeet, I noticed ना 28 participants थे starting में, now only 14 participants. Yeah, I also noticed that. No issue. We will take action on this. And we will take action on this thing also, that no one is interested to do anything. Okay. Okay, I will talk this in the meeting. That's why everyone is silent. You are inaudible. Sorry? Sorry, Anna, what? Actually, you are inaudible actually. I am not audible. Yeah, now it's clear. Okay. So can you please tell me why you haven't done the work? Actually, I'm traveling right now. That is why. Okay. What about others? Okay, I will figure out something for you all that you are not doing work. Okay, so I think we can end this meeting here, as no one is interested to talk. Okay, so good night, everyone.